The American meddling in Iran during post-election period has made it impossible for them to get a transit deal for military supplies through Iran for its forces in Afghanistan. The Russians have allowed transit route to the American forces for military supplies, but this route is extremely uneconomical and expensive and hence will be used for very limited supplies. So now the Americans are totally dependent on Pakistan. Pakistan's refusal to let NATO supplies pass will create a doomsday scenario for the coalition forces in Afghanistan. This factor, added to the rising pressure from a resurgent China on USA to stop destabilizing Pakistan, has placed Pakistan in a stronger bargaining position. China has indirectly blamed India for fomenting trouble in its Xinjiang Uyghur Autonomous Region, which is likely to draw China and Pakistan closer to each other against India. To add icing to the cake, relations between India and USA have soured due to clash of interests. The Indians have been trying to destabilize Pakistan in whatever ways possible, which have on many instances harmed American interests in the region. An example is the recently bombed PC hotel in Peshawar, which the Americans wanted to convert into a huge consulate. In some instances, the Indian weapons have also landed in the wrong hands and have been used against the US Army. Pakistan's military has exploited the American weaknesses, and now the Americans have removed conditions for aid, like the removal of Pakistani troops from its eastern border and handing over AQ Khan to USA. The exclusion of such controversial clauses is primarily due to the pressure applied by the army. The American troop surge in Afghanistan was initially directed at Pakistan, and the additional troops were to be stationed on the Afghanistan-Pakistan border. But now the Afghan Taliban have launched a series of offensives on the major Afghan cities including Kabul, forcing the Americans to now deploy them in those cities, hence relieving pressure from Pakistan. Zardari is day by day becoming weaker, and there is total confusion in Washington as to how to deal with Pakistan, as a safe American exit from Afghanistan, which now seems inevitable, can only be successful with the cooperation of Pakistan. But there are strong Indian and Jewish lobbies who want USA to continue with its policies and denuclearize Pakistan before they exit. The Qaid once referred to India and Congress Party in the following terms: "They have accepted the partition, but they will never truly accept us as a nation and will always attempt to undo us." ये जहां पख्तूनिस्तान बनाने जा रहे थे, हो सकता है कि अल्लाह ताला पाकिस्तान और अफगानिस्तान की ऐसी कन्फेडरेशन बना दे कि पाकिस्तान का एक्सटेंड इन्फ्लुएंस जो है हमारा अफगानिस्तान के अंदर इतना आगे तक एक्सटेंड कर जाए, जो ऑलरेडी है। तमाम अफगानिस्तान में पाकिस्तानी करेंसी इस्तेमाल होती है, बिल्कुल लाखों के तादाद में अफगानिस्तान के लोग पाकिस्तान में मौजूद हैं जो हमारी पश्तो बोलते हैं, उर्दू जानते हैं। पाकिस्तान एक एक गंदम का दाना जो अफगानिस्तान में खाया जाता है पाकिस्तान से जाता है, हमारा कपड़ा पहनते हैं, हमारा बर्तन इस्तेमाल करते हैं, उनके साथ एक इकोनॉमिक रिलेशनशिप है। लाखों की तादाद में अफगानिस्तान के लोग रोज बॉर्डर क्रॉस करते हैं और वो हमारे भाई हैं, हमारे वजूद का हिस्सा हैं। तारीखी तौर पर हम एक ही कौम, एक ही जबान बोलने वाले, एक ही मजहब वाले लोग हैं, एक अल्लाह रसूल को मानने वाले हैं। अमेरिकन अगर ये समझते हैं कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान को फर्क डाल के फसाद बर्पा करवाते रहेंगे पाकिस्तान में, ये उनकी गलत फहमी है। फैसले पाकिस्तानी कौम को करने हैं। अफगानिस्तान के लोग तो इंतजार कर रहे हैं, ना वो ईरान जा सकते हैं ना सेंट्रल एशिया जा सकते हैं, उनके पास तो रास्ता ही सिर्फ पाकिस्तान का है। अगर हम सिर्फ प्यार और मोहब्बत के साथ एक अफगान नॉर्दर्न अलायंस के लोग हों या पश्तून हो या ताजिक्स हों या नॉन ताजिक्स हों, हमें सबको सीने से लगाना है और हमें डायरेक्ट एंगेज करना चाहिए उनको, अमेरिकन को परे करके। जिस तरह हमने पाकिस्तान अफगानिस्तान जिरगे में फैसला किया था कि हम अफगानिस्तान की तमाम पार्टीज के साथ अब बातचीत शुरू करें। We should dictate our points now. We should dictate our terms. Pakistan should launch an Afghan peace initiative. पाकिस्तान अफगानिस्तान जिरगा अमेरिकन को अलग करके हम खुद बात करेंगे। अमेरिकन द पार्ट ऑफ द प्रॉब्लम, दे नॉट पार्ट ऑफ द सोल्यूशन, और उनकी वजह से पाकिस्तान में प्रॉब्लम्स हो रही है। हम एक ऐसी स्टेज पे आ चुके हैं कि अब आने वाले दिनों में अगर हम चंद मजबूत फैसले कर लें तो इस पूरे खित्ते को हम कंट्रोल कर रहे होंगे। अमेरिकन पॉलिसी बुरी तरह फेल हो चुकी है, वो शिकस्त खा चुके हैं। ये मौका हमारे सामने ये है कि वी शुड मूव फॉरवर्ड एंड ग्रैब द अपॉर्चुनिटी। हम क्लियर वार्निंग दे रहे हैं, खबरदार पाकिस्तान के खिलाफ मत बात करो। वी हैव सीन यू इनफ, बहुत हो चुका है ये 60 साल में मजाक तुम्हारा, कभी पख्तूनिस्तान कभी बलूचिस्तान आजाद। ये पाकिस्तान का एक मरकज है, उम्मत मुस्लिमा की आबरू है। हमारी लाशों के ऊपर से तुम पहुंचोगे इस पाकिस्तान के नुकसान पहुंचाने के लिए। You got no business in Afghanistan. You're an occupation force. Leave that country. क्योंकि जब ये अफगानिस्तान को छोड़ेंगे उस वक्त पाकिस्तान में फसाद बंद होगा, क्योंकि ये खुद वहां बैठ के इंडियंस और इसराइली उनकी अम्ब्रेला के नीचे पाकिस्तान में फसाद बर्पा किए हुए। The enemy can dream on, nothing will happen to Pakistan.
When the Muslims of the subcontinent demanded a separate homeland, the Hindus and the British laughed. But we carved out a separate homeland for the Muslims and stunned the world. After the creation of Pakistan, India predicted that a hapless country like Pakistan could not last for more than a couple of months. We proved them wrong once again. When Brezhnev sent his tanks into Kabul, the Russian generals dreamt of tasting the warm waters of the Arabian Sea. Pakistan started harassing the Soviets 2 years before the Americans thought it wise to join the effort. We not only defeated a superpower, but also reduced it in size. When Pakistan started on the path to achieve nuclear status, no amount of coercion, sanctions or arm twisting worked. Not even the threat of an Israeli airstrike could undo our resolve. As a country which at the time did not even manufacture its own needles, nor had any international standard engineering universities, Pakistan went nuclear on 18th May 1999. We have a history of doing the inevitable. We must be firm and resolute in the bid to save Pakistan. We have made mistakes and suffered tribulations, but if the enemy thinks they can wipe Pakistan off the map, they are mistaken. Pakistan has now become immune to prophecies of doom. All the blasts and acts of terror have made the Pakistanis more resilient and hardened. Had any other nation faced a situation like ours today, it would have disintegrated due to the tremendous social and economic repercussions. The Almighty has given us one of the most powerful war machines in the world, men of steel. Pakistan will not go down. We will rise once again. Remember, it's the darkest before dawn.